जी नमस्कार दोस्तों। तो एज आई टोल्ड इन माय अर्ली वीडियोस दैट I am feeling that this chapters, this book of class NCERT, class 10 NCERT, I read earlier, and yeah, I read it during the seated preparation. But I forget about that because only I could not remember it because of the lack of revision, right? So please do understand कि just reading is not reading is important, but also do revise. That is very important. Revision is very important. So I thought कि I will create a playlist for all the videos from class 6 to class 12 NCERT. Almost it will be completed. Only one book is left there, that is class 12 का practical geography book. बाकी सारे books हमने एक बार read out कर ली है. So I will attach all the videos in a sequence or arrange all the videos under one single playlist from class 6 to class 12 NCERT geography books. Okay, so if it helps you to revise, I mean you just plug in your earphones and just keep listening, right? And that is the main purpose of creating recording such videos while I am reading, so that I also could revise by using that method. Okay, so let's start this chapter 6 and I will try to finish this book in single video. So let's see what happens. On the occasion of Diwali, Haris went to a market with his parents. They purchased shoes and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar, tea and diyas, earthen lamps. Horace observed that the shops in the market are flooded with items for sale. He wondered how so many items could be made in such large quantities. His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by masons in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individual artisans in household industry. Do you have some ideas about these industries? Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore, and aluminium from bauxite? Do you also know that some types of cloths are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries fall into this category. Some people are employed in providing services. In this chapter, we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. Now, importance of manufacturing. Manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economic development in particular, mainly because manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. Export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. Countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. Agriculture and industry are not exclusive of each other, they move hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools, etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production processes very efficient. In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. Self sufficiency alone is not enough. Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. Only then we will be able to compete in the international market. Now, classification of industries.
List the various manufactured products you use in your daily life, such as transistors, electric bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines, and so on. If we classify the various industries based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as follows on the basis of source of raw materials used: agro-based, cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber and sugar, tea, coffee, edible oil; mineral-based, iron and steel, cement, aluminum, machine tools, petrochemicals. According to their main role, basic or key industries are those which supply their products as raw materials to manufacture other goods, example iron and steel, and copper smelting, aluminum smelting. Consumer industries that produce goods for direct use by consumers, sugar, toothpaste, paper, sewing machines, fans, etc. On the basis of capital investment, a small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed in rupees 1 crore. On the basis of ownership, public sector owned and operated by government agencies, WEL, SEL, etc. Private sector industries owned and operated by individuals or a group of individuals, Tisco, Bajaj Auto Limited, Dabur Industries. Joint sector industries which are jointly run by the state and individuals or a group of individuals, Oil India Limited, OIL, is jointly owned by public and private sector. Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers, or both. They pool in the resources and share the profits or losses proportionately. Such examples are the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala. Based on the bulk and weight of raw material and finished goods, heavy industries such as iron and steel, light industries that use light raw materials and produce light goods such as electrical goods industries. Classify the following activity into two groups on the basis of bulk and weight of raw material and finished goods. ये एक्टिविटी है, चलो कर लेना. Now agro based industries: cotton, jute, silk, woolen, textile, sugar and edible oil, etc. industries are based on agricultural raw materials. So that is agro based industries. So here a classification is given: value addition in the textile industry. Oh sorry, not classification, value addition in the textile industry. So first, fiber production. So from that we get the raw fiber. Okay, then fiber production के बाद स्पिनिंग के थ्रू हमको मिलता है yarn. देन आता है वीविंग, निटिंग, जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं. और देन डाइंग एंड फिनिशिंग और गारमेंट. देन आता है आपका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं. तो इससे हम गारमेंट्स मिलते हैं. तो रॉ फाइबर से yarn से फैब्रिक एंड फैब्रिक से गारमेंट हमको मिल जाता है. अब देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे. The textile industry occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation and foreign exchange earnings. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain. तो देखो ये भी सवाल आया था कहीं, मैंने देखा रिसेंटली, कौन सी जो इंडस्ट्री है सेल्फ रिलायंट है एंड इन इट्स एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन है इन इंडिया. ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल, सॉरी नॉट कॉटन टेक्सटाइल बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि नीचे दिया हुआ देखो कॉटन टेक्सटाइल बोल के अलग से, बट क्या डिफरेंस है देखते हैं आगे जाकर पता चलता कि नहीं. फिर ना हमको मतलब कहीं और से जानना पड़ेगा. बट वेरी इंपॉर्टेंट ना, टेक्सटाइल वर्सेस कॉटन टेक्सटाइल, व्हाट इज़ द डिफरेंस. अगर आपको ऑलरेडी पता है और आप एक लाइन में समराइज कर सकते हो तो कमेंट करिए. चलिए अच्छा, तो इट इज़ दी ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन. इसका मतलब क्या है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाइस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री. सो दैट इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन. कहीं कहीं से और कुछ लेना नहीं है. देन कॉटन टेक्सटाइल्स. इन एंसेंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स आर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग and handloom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use. Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England. The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. The two world wars were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK. Hence, they gave a boost to the development of the cotton textile industry. In the early years,
The cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw cotton, market, transport, including accessible port facilities, labor, moist climate, etc., contributed towards its localization. This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers, cotton wool packers, and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. The industry, by creating demand, supports many other industries such as chemicals and dyes, packaging materials, and engineering works. While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, jewelry, embroidery, etc. India has world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high-quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, powerloom, and in mills. The handspoon khadi provides large-scale employment to weavers in their homes as a cottage industry. Why did Mahatma Gandhi lay emphasis on spinning yarn and weaving khadi? Why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than powerloom and handloom? ना फिर आता है जूट टेक्सटाइल। अच्छा, तो टेक्सटाइल के दो भाग है क्या? कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल। अच्छा, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कॉटन टेक्सटाइल है, फिर आता है जूट टेक्सटाइल। ऐसा है क्या? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो देखो, इंडिया प्रोडक्शन तो करता है, हाइस्ट है, बट एक्सपोर्ट में बांग्लादेश हाइस्ट है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर भी क्वेश्चन बने थे, मैंने रिसेंटली जो सॉल्व कर रहा था ना PSQ, सारे चीज़ें NCERT से पूछे गए भाई BPSC। तो अगर आप BPSC को टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली NCERT को बस गोल के खा लो तुम, वैसा कुछ बोलता है ना हिंदी में, तो वही बात है ना। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली along the banks of the Hooghly river in a narrow belt. The first jute mill was set up near कोलकाता in 1855। तो हमने कॉटन मिल देखा था 1854 में मुंबई में, ठीक है। और जूट मिल कहाँ है? 1855 में एट रिसरा, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया, बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान। देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का लोकेशन यहाँ पर दिखाया गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, ठीक है, नॉट जूट टेक्सटाइल। तो यहाँ पर क्या क्या है? कॉटन टेक्सटाइल है, वुलन टेक्सटाइल है। अच्छा, तो टेक्सटाइल मतलब वही है, गारमेंट्स वगैरह कुछ है शायद, और बट जूट टेक्सटाइल का मतलब क्या है? एक बार मीनिंग देख लो सर्च करके, टेक्सटाइल का मतलब क्या है। तो देखो, बहुत सारे टेक्सटाइल हो सकते हैं, सिल्क टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, देना हमने पढ़ा जूट टेक्सटाइल। तो यहाँ पर जूट को नहीं दिखाएगा, सिर्फ तीनों को दिखाएगा, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल एंड सिल्क टेक्सटाइल। ये होता है मैप। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार ये मैप देखना है तो NCERT की बुक से देखो, ठीक है। कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाएगा आपको, एक फोटोग्राफिक मेमोरी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ यार मैंने ये दिखा था। नो कंजेशन, हाँ, नॉट लाइक योर एटलास, बकवास है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर से। So factors responsible for their location in the Hooghly Basin are proximity of the jute producing areas, inexpensive water transport supported by a good network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh. Kolkata as a large urban center provides banking, insurance and port facilities for export of jute goods. तो क्यों बने थे वो बता दिया। तो हमने देखो टेक्सटाइल कितने पाया? कॉटन पाया, वुलन पाया, जूट पाया और एक था सिल्क टेक्सटाइल, ठीक है। तो टेक्सटाइल का मतलब है, एक बार समझ लो आप, मेरे को भी देखना पड़ेगा, तो आप ही मैं नहीं खोल रहा हूँ, पता नहीं वीडियो शायद पॉज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडोसारी। The raw material used in this industry is bulky and in haulage its sucrose content reduces.
The mills are located in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana, and Madhya Pradesh. 60% mills are in Uttar Pradesh and Bihar. This industry is seasonal in nature, so it is ideally suited to the cooperative sector. Can you explain why this is so? In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because the cane produced here has a higher sucrose content. The cooler climate also ensures a longer crushing season. Moreover, the cooperatives are more successful in these states. Now, mineral based industries. So, industries that use minerals and metals as raw materials are called mineral based industries. Can you name some industries that would fall in this category? Iron and steel industry. The iron and steel industry is the basic industry since all the other industries, heavy, medium, and light, depend on it for their machinery. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment, and a variety of consumer goods. Make a list of all such goods made of steel that you can think of. Production and consumption of steel is often recorded as the index of a country's development. Iron and steel is a heavy industry because all the raw materials as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation costs. Iron ore, coking coal, and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. Some quantities of manganese are also required to harden the steel. Where should the steel plants be ideally located? Remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the markets and consumers. Process of manufacture of steel blast furnace. Transport of raw material to plant. Iron ore is melted, limestone is flaxing material which is added, slag is removed, coke is burnt to heat the ore. देन आता है पिग आयरन. अच्छा, ये बोल रहे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, मतलब स्टील कैसे बनता है वो प्रोसेस आपको दिखाया गया है फ्लो चार्ट के थ्रू. तो देखो, पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट. प्लांट में पहले लाया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील ब्लास्ट फार्नेस. अरे यार क्या बोल रहे हो, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. अच्छा, ये मेन हेडिंग है. अब देखो, पहले तो हमने प्लांट में लाया पड़ेगा मटेरियल्स, ओके. नाउ ब्लास्ट फार्नेस में डालना पड़ेगा. तो वहाँ पर क्या क्या डालना पड़ता है? देखो, आयरन ओर इज मेल्टेड, मतलब क्या होते हैं, आयरन ओर मेल्ट हो जाते हैं. लाइमस्टोन इज फ्लैक्सिंग मटेरियल व्हिच इज एडेड, तो लाइमस्टोन ऐड किया जाता है जो कि वो फ्लैक्सिंग करते हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज है उसे रिमूव करते हैं. देन स्लैग इज रिमूव, उसके बाद जो स्लैग बनता है वो रिमूव किया जाता है. एंड कोक इज बर्न्ड टू हीट दी ओर, ठीक है. देन वो फिर से उसको हिट किया जाता है, शायद ऐसे बोल रहा है. देन उससे बनता है आपका पिग आयरन. सो मोल्टन मटेरियल्स पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स. तो मोल्ड किया जाता है जब मोल्टन आयरन को, तो उसे हम पिग बोलते हैं. देन आपका आता है स्टील मेकिंग. सो पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज. मैंगनीज, निकेल, क्रोमियम आर एडेड. मैंगनीज, क्रोमियम, निकेल आर एडेड, ठीक है. एंड फ्रॉम देयर शेपिंग मेटल, दैट इज रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग. Okay, so here again given the map iron and steel plants of India. So basically you can see how many few steel plants are there, right? जैसे कि आपका बार्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जामशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विजयनगर, भद्रावती and Salem. That's it. So you see the map is crystal clear, right? Once you say carefully it will be remembered. बार्नपुर, दुर्गापुर, आप लोकेशन भी याद रख सकते हो, जैसे दुर्गापुर, बार्नपुर, बोकारो. इधर से दुर्गापुर एंड बार्नपुर इज इन वेस्ट बंगाल, बोकारो इज इन बिहार, हो गया, ठीक. देना आता है आपका जामशेदपुर. जामशेदपुर भी, अरे सॉरी, बोकारो बिहार में नहीं है यार, झारखंड में है. सॉरी झारखंड. तो जामशेदपुर एंड बोकारो झारखंड में है. देन झारखंड के नीचे आपका उड़ीसा, तो उड़ीसा में है आपका राउरकेला. देन छत्तीसगढ़ में है आपका भिलाई. एंड ये क्या है, कर्नाटक में आपका विजयनगर एंड भद्रावती. एंड सालेम इज इन तमिलनाडु. दैट्स इट. तो ये सर आपका आयरन एंड स्टील प्लांट हो गए. Now, Chotanagpur Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industries. It is largely because of the relative advantages this region has for the development of this industry. These include low cost of iron ore, high-grade raw materials in proximity, cheap labor, and vast growth potential in the home market. Aluminum smelting. Aluminum smelting is the second most important metallurgical industry in India. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable, and becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture
manufacture aircraft, utensils, and wares. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc, and lead in a number of industries. That is aluminum smelting. Okay, now see, aluminum smelting plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. तो ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात किया जा रहा है, नॉट आयरन एंड स्टील. एल्यूमिनियम प्लांट्स आर लोकेटेड इन द कंट्री इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. Bauxite, the raw material used in the smelters, is a very bulky, dark reddish colored rock, that is bauxite. The flowchart given below shows the process of manufacturing aluminium. Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of the industry. Bauxite, the raw material used in the smelters, is a very bulky, dark reddish colored rock. The flowchart given below shows the process of manufacturing aluminium. Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of the industry. Now, chemical industries. The chemical industry in India is fast growing and diversifying. It comprises both large and small scale manufacturing units. Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sectors. Inorganic chemicals include sulfuric acid, used to manufacture fertilizers, synthetic fibers, plastics, adhesives, paints, dyes, stuffs. Nitric acid, alkalis, soda ash, used to make glass, soaps and detergents, paper, and caustic soda. These industries are widely spread over the country. Why do you think it is so? Organic chemicals include petrochemicals, which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastics, dyes, stuffs, drugs, and pharmaceuticals. Organic chemical plants are located near oil refineries or petrochemical plants. The chemical industry is its own largest consumer. Basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture, or directly for consumer markets. Make a list of the products you are aware of. तो हमने केमिकल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा यहाँ पर. तो यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, देखो, और कि 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट से हमको मिलता है 2 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम, एंड 2 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम से हमको मिलता है 1 टन, एल्यूमिना से हमको मिलता है 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम. अच्छा, तो 3 स्टेज है एल्यूमिनियम पाने का. पहले तो हमको बॉक्साइट जो कि आयरन एल्यूमिनियम का ओर है, तो बॉक्साइट से पहले हमको एल्यूमिना मिलेगा. ठीक है, तो 4 to 6 टन बॉक्साइट से हमको कितना एल्यूमिना मिलेगा? ओनली 2 टन्स एल्यूमिनियम मिलेगा. नाउ 2 टन्स एल्यूमिना से हमको 1 टन एल्यूमिनियम मिलेगा. ठीक है, मतलब वेट लॉस इंडस्ट्री. नाउ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जैसे हमने आयरन स्टील में पढ़ा था, जैसे दिया गया है. तो बॉक्साइट जो है पहले रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, बॉक्साइट क्वारी. नाउ इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइन से, फिर एल्यूमिना बनाया जाता है. बॉक्साइट क्रैश्ड एंड एल्यूमिना डिजॉल्व्ड आउट. एल्यूमिनियम रिफाइनरी बोलते हैं इसे. देन वहाँ से बल्क और शिप टू साइट ऑफ स्मेल्टर. कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम ए रिफाइनरी. पिच फ्रॉम आ कोयलरी. तो पिच भी ये सी बनता है क्या, जो रोड पे हम देते हैं, रोड बांधते हैं जिसे पिच. देखो, क्रायोलाइट, ए मॉल्टन मेटल, एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट. एल्यूमिनियम स्मेल्टर में दिया जाता है, और एल्यूमिनियम स्मेल्टर इधर से इलेक्ट्रिसिटी भी लगता है. ठीक है, तो एल्यूमिनियम बनाने क्रायोलाइट लगता है. क्या है? एक मॉल्टन मेटल है, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट. और इलेक्ट्रिसिटी कितना लगता है? देखो, 18,600 किलोवाट आवर पर टन ऑफ ओर. KWH मतलब किलो आवर है ना, किलोवाट आवर ना, किलोवाट पर आवर. 18,600 किलोवाट पर आवर पर टन ऑफ ओर, मतलब 1 टन एल्यूमिना को स्मेल्ट करने में आपको इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा? 18,600 किलोवाट पर आवर. तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सी हम एक यूज़ करते हैं? जैसे आयरन स्टील में लाइमस्टोन यूज होता है एज ए प्यूरीफायर. तो क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है. द मीनिंग एक बार देख लो आप, इलेक्ट्रोलाइट क्या है.
ओके, अब आते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate DAP, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. The third, that is potash, is entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form. तो हमारे इंडिया में कोई पोटास का रिजर्व नहीं है. After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country. Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, and Kerala contribute towards half of the fertilizer production. Other significant producers are Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal, Goa, Delhi, Madhya Pradesh and Canada. यार बाद किसने किया? Cement industry. Cement is essential for construction activities such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dams and for other commercial establishment. This industry requires bulky and heavy raw materials like limestone, silica and gypsum. Coal and electric power are needed apart from rail transportation. The industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries. Cement industry की बात हो रहा है. Now see automobile industry. Automobiles provide vehicle for quick transport of goods, services and passengers. Transport of गुड सर्विसेज या गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर होगा. ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स. आफ्टर द लिबरलाइजेशन, द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स stimulated the demand for vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger cars, two and three wheelers. The industry is located around Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur and Bengaluru. Information technology and electronics industry. The electronics industry covers a wide range of products from transistor sets of to television, telephone, cellular telecom, telephone exchange, radars, computers and many other equipments required by the telecommunication industry. Bengaluru has emerged as the electronic capital of India. Other important centers for electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow and Coimbatore. The major industry concentration is at Bengaluru, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Pune. A major impact of this industry has been on employment generation. The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं हम. इंडस्ट्री बहुत कर लिए, अब देखो पॉल्यूशन प्रॉब्लम भी तो है. Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for four types of pollution: air, water, land and noise. The polluting industries also include thermal power plants. Air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. Airborne particulate materials contain both solid and liquid particles like dust, sprays, mist and smoke. Smoke is emitted by chemical and paper factories, brick kilns, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms. Toxic gas leaks can be very hazardous with long-term effects. Are you aware of the Bhopal gas tragedy that occurred? Air pollution adversely affects human health, animals, plants, buildings and the atmosphere as a whole. Water pollution is caused by organic and inorganic industrial wastes and effluents discharged into rivers. The main culprits in this regard are paper, pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries that let out dyes, detergents, acids, salts and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber, etc. into the water bodies. Fly ash, phosphogypsum and iron and steel slags are the major solid wastes in India. Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling. What would be the effect on aquatic life? Wastes from nuclear power plants, nuclear and weapon production facilities cause cancer, birth defects and miscarriages. Soil and water pollution are closely related.
Dumping of wastes, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salts, and garbage renders the soil useless. Rainwater percolates to the soil, carrying the pollutants to the ground, and the groundwater also gets contaminated. Noise pollution not only results in irritation and anger, it can also cause hearing impairment, increased heart rate, and blood pressure, among other psychological effects. Unwanted sound is an irritant and a source of stress. Industrial and construction activities, machinery, factory equipment, generators, saws, and pneumatic and electric drills also make a lot of noise. Control of environmental degradation. Every liter of water, wastewater discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. How can the industrial pollution of fresh water, मतलब आप एक बटल वन बटल जो है इंडस्ट्रियल वाटर अपने पानी में डाल दिया तो 8 बटल फ्रेश वाटर को ख़राब कर देगी वो, समझ रहे हो? Every liter of wastewater discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. Minimizing use water for processing or processing by reusing and recycling it into 2 or more successive stages. Harvesting of rainwater to meet water requirements. Treating hot water and effluents before releasing them in rivers and ponds. Treatment of industrial effluents can be done in 3 phases. Primary treatment by mechanical means. This involves screening, grinding, flocculation, and sedimentation. Secondary treatment by biological process. Tertiary treatment by biological, chemical, and physical processes. This involves recycling of wastewater. Overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally. Particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke attacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrappers, and inertial separators. Smoke can be reduced by using oil or gas instead. Of coal in factories. Machinery and equipment can be used and generators should be fitted with silencers. Almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise. Noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones. The challenge of sustainable development requires integration of economic development with environmental concerns. ना यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे, देखो यहाँ पर दिया गया है इंडिया सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो श्रीनगर में एक है, श्रीनगर में है, मोहाली में है, नोएडा में है, जयपुर में है, गांधीनगर में है, इंदौर में है, मुंबई है, पुणे है, हैदराबाद में है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, असम में गुवाहाटी है, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से और किसी में है नहीं इंडस्ट्रियल पार्क्स। तो कोलकाता है, देखो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इनमें नहीं है कोई इंडस्ट्रियल पार्क। और हैदराबाद है, फिर आपका विशाखापत्तनम है, और बेंगलुरु तो है, मैसूरू है, चेन्नई है, केरला में त्रिवनंतपुरम है। तो ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल पार्क्स है। ठीक है, हमने इस चैप्टर के एंड तक आ गए हैं और सिर्फ छोटी सी टॉपिक एनटीपीसी शोज दी वे। एनटीपीसी इज ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर ईएमएस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001। तो ये भी सवाल पूछा गया था भाई, इस बार की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, बट मैंने जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पर कहीं ना कहीं था, एग्जैक्ट याद नहीं कर सकते। The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuels in places where it is setting up power plants. This has been possible through optimum utilization of equipment, adopting latest techniques and upgrading existing equipment, minimizing waste generation by maximizing ash utilization. एनटीपीसी की बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने एक स्ट्रेटजी डेवलप किया है, तो कैसे क्या है वो बात कर रहा है। और दिस इज द ओनली कॉर्पोरेशन दैट हैज एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन 1401। Optimum utilization of equipment, adopting latest techniques and upgrading existing equipment, minimizing waste generation by maximizing ash utilization, providing green belts for nurturing ecological balance and addressing the question of special purpose vehicles for afforestation, reducing environmental pollution through ash pond management, ash water recycling system and liquid waste management, ecological monitoring, reviews and online database management for all its power stations. जैसे रामागुंडम प्लांट, तो ये एनटीपीसी का है ना,
NTPC इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन। NTPC जो है मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब देखो हम 7 चैप्टर में जाएंगे और देखेंगे क्या है 7 चैप्टर में। तो देखते हैं चैप्टर 7 में है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये है लास्ट चैप्टर इस बुक का। तो चलिए इसको झट पढ़ लेते हैं। We use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are made by bringing things from other places. Goods and services do not move from supply locales to demand locales on their own. The movement of these goods and services from their supply locations to demand location necessitates the need for transport. Some people are engaged in facilitating these movements. These are known to be traders who make the products come to the consumers by transportation. Thus, the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. Therefore, efficient means of transport are prerequisites for fast development. Movement of these goods and services can be over 3 important domains of our earth, that is land, water and air. Based on these, transport can also be classified into land, water and air transport. The help of equally developed communication, क्या पढ़ा हमने यहाँ ट्रांसपोर्ट। अच्छा फिर यहाँ से तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या। हाँ यहाँ पर और भी है ना। तो देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक टेबल दिया गया, इसको देखते बाद में। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस. With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide. Today, the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast-moving transport. Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. Therefore, transport, communication and trade are complementary to each other. Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural plurality. Railways, airways, waterways, newspaper, radio, television, cinema and internet have been contributing to its socio-economic progress in many ways. The traders from local to international levels have added to the vitality of its economy. It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nation and its modern economy. It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. Here मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गिवन है, लैंड, वाटर एंड एयर हमारा 3 मोड है। तो लैंड में क्या क्या मिलेगा आपको, रोड मिलेगा, रेलवे मिलेगा, पाइपलाइन भी मिलेगा। वाटर में आपको इनलैंड मिलेगा एंड ओवरसीज मिलेगा। और एयर में क्या मिलेगा, डोमेस्टिक एयरवेज मिलेगा, इंटरनेशनल एयरवेज मिलेगा। डोमेस्टिक में भी 2 है, पब्लिक अंडरटेकिंग वाली है और प्राइवेट एयरलाइन है। अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो रोडेज की बात करेंगे। इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 62.16 लाख किमी इन इंडिया। तो फास्ट कौन है, फास्ट आई थिंक यूएसए होगा तो क्या। तो देखो 2021 का डेटा दिया गया है कि इंडिया का रैंक सेकंड है। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज विथ व्हिच दे कैन बी बिल्ड and maintained. The growing importance of road transport vis-a-vis rail transport is rooted in the following reasons. Construction cost of roads is much lower than that of railway lines. Roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography. Roads can negotiate higher gradients of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas. Road transport is economical in transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over short distances. It also provides door-to-door service. Thus, the cost of loading and unloading is much lower. Road transport is also used as a feeder to other modes of transport, such as they provide a link between railway stations, air and seaports. In India, roads are classified in the following 6 classes according to their capacity. Look at the map of the national highways and find out about the significant role played by these roads. Golden Quadrilateral Superhighways. The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6-lane superhighways. The north-south corridors linking Srinagar, Jammu and Kashmir and Kanyakumari, Tamil Nadu and east-west corridor connecting Silchar, Assam and पोरबंदर। तो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में पूछा गया था, तो मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, रुको। हाँ, तो BPSC 2023 ये वाला रिसेंटली जो मैंने दे के आया, तो इसका क्वेश्चन ये था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया। तो आपको आंसर मिल गया होगा, ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर जो कि आसाम में है एंड पोरबंदर जो कि गुजरात में है, ठीक है।
और ये देखो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको कनेक्ट करता है, श्रीनगर को कनेक्ट करता है जो कि जम्मू कश्मीर में है, एंड कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। अब द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी याद रखना किसने बिल्ड किया है, NHAI ने। ना नेशनल हाईवेज की बात करेंगे हम, तो ये हमने पढ़ा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है ना, तो बहुत सारे सुपर हाईवेज है। अब नेशनल हाईवेज की बात करते हैं। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम। ए नंबर ऑफ major national highways run in north south east west direction. State highways, roads linking a state capital with different district headquarters are known as a state highways. कितनी अच्छी रोड है, हाँ पिक्चर में दिखने के लिए मिल रहा है, अच्छी बात है। ऐसा ही होता है, होंगे इसे दिखाने का भी ऐसा रोड है, दिखाया नहीं इस साइड पे कभी। चलो तो कहाँ वाली रोड है, देखो अहमदाबाद भादोदरा एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो नज़र इस तरीके से बहुत सुंदर है यार। चलिए, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ नेशनल हाईवे नंबर्स ओल्ड एंड न्यू फ्रॉम द वेबसाइट। तो यहाँ पर देखो आपको नेशनल हाईवे का डिटेल चाहिए तो ये वेबसाइट में आपको जाना होगा morth.nic.in। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर इज नोन बाय व्हिच नेशनल हाईवे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देख ले, इसको आंसर तो नहीं पता मेरे को। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर मतलब पंजाब, तो इसके बीच में जो शेरशाह सूरी मार्ग है हिस्टोरिकल नेम था उसका अभी नाम क्या है, नेशनल हाईवे कौन सी है, देखना पड़ेगा इसको। नाउ डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करते हैं। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अदर रोड्स रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस, आपके घर के साथ पड़ोसी के घर लिंक करता है। तो अदर रोड से हो गया रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विथ टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। Under this scheme, special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all-season motorable road. Border roads. Apart from these, border roads organization a government of India undertaking constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. This organization was established in 1960 for the development of the roads of strategic importance in the northern and northeastern border areas. These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of this area. That is the border roads. अब यहाँ पे देखो रोड दिया गया, तो ये भाई मैप बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आएगा मेरे को, बहुत ही ये है। तो एनसीईआरटी को मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि भाई आप सेपरेट कर दो इस मैप को, मतलब इतना कंजेस्टेड आपने पूरा एटलास बना दिया इसको, ठीक है, किसी काम का नहीं है, याद नहीं रहेगा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के लिए एक अलग मैप बना दो, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसका आप एक कर सकते हो, फिर कर दो ना, जिस हिसाब से मतलब मैप को थोड़ा लेस कंजेस्ट कर दो, सेपरेट कर दो, बस ये रिक्वेस्ट रहेगा एनसीईआरटी से। अब the world's longest highway tunnel, Atal Tunnel, has been built by Border Road Organization. This tunnel connects Manali to Lahul Spiti Valley throughout the year. Earlier, the valley was cut off for about 6 months each year owing to heavy snowfall. The tunnel is built with ultra-modern specifications in the Pirpanjal range of Himalayas at an altitude of 3000 meters from the mean sea level. नेक्स्ट देखते क्या है। रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल एंड अनमेटल रोड्स। मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोल। देयरफॉर therefore and narrow. However, in recent years, fast development of road network has taken place in different parts of the country. Railways की बात करते हैं। Railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. But time पे तो आते नहीं रेलवे, एक टाइम दिखाता है, आता है 1 घंटा 2 घंटा लेट। भाई जो टाइम में आना है उसी को दिखाना हमसे क्या कर रहे हो यार तुम। Railways also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distances. Apart from an import means of transport, the Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years. Railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. The Indian Railways is the largest public sector undertaking in the country. The first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853. 1853 में क्या बना था, कुछ नहीं बना था, रेलवे बना था। उसके बाद हमारा
कॉटन टेक्सटाइल बना था 1854 में, और उसके बाद जूट टेक्सटाइल बना था हमारा कोलकाता में, तो 1855 में था। तो कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर मुंबई टू थाने, ये फर्स्ट ट्रेन यहाँ पर गई थी। द इंडियन रेलवेज इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू 16 जोन्स, ठीक है, तो अभी के लिए कितने जोन से, 16 जोन से इंडियन रेलवेज का। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड administrative factors. The northern plains, with their vast level land, high population density, and rich agricultural resources, provided the most favorable condition for their growth. However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds posed some obstacles. In the hilly terrains of the peninsular region, railway tracks are laid through low hills, gaps, or tunnels. The Himalayan mountains regions too are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population, and lack of economic opportunities. Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan, swamps of Gujarat, forested tracts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand. The contiguous stretch of Sahyadri could be crossed only through gaps or passes, ghats. In recent times, the development of the Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of passengers and goods in this most important economic region of India. It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides. Today, the railways have become more important in our national economy than all other means of transport put together. However, rail transport suffers from certain problems as well. Many passengers travel without tickets, thefts and damaging of railway property has not yet stopped completely. People stop the trains, pull the chain unnecessarily, and this causes heavy damage to the railway. Think over it how we can help our railway in running as per the scheduled time. देखो यहाँ पर भी बोला गया है भाई, people stop the trains, pull the chain unnecessarily, and this cause heavy damage to the railway. बट ऐसा तो मेरे को कभी नहीं दिखा यार कि इस वजह से ट्रेन रुक गया है, ऐसे ही रोक देते हो लोग। थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प अवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। ये अच्छी सवाल है, बट आपने जो बताया कि पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन, इस तरह बेफिजूल की बातें हैं। पाइपलाइंस, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया. In the past, these are used to transport water to cities and industries. Now, these are used for transporting crude oil, petroleum products, and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factories, and big thermal power plants. Solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry. The far inland locations of refineries like Barauni, Mathura, Panipat, and gas-based fertilizer plants could be thought of only because of pipelines. Initial cost of laying pipelines is high, but subsequent running costs are minimal. It rules out transshipment losses or delays. There are three important networks of pipeline transportation in the country, from oil field in Upper Assam to Kanpur, Uttar Pradesh via Guwahati, Barauni, and Allahabad. It has branches from Barauni to Haldia via Rajband to Maurigram, and Guwahati to Siliguri. From Salaya in Gujarat to Jalandhar in Punjab via Viramgam, Mathura, Delhi, and Sonipat. It has branches to connect Koyali near Bhadodara, Gujarat, Chaksu, and other places. The first 1,700 km long Hajira Vijaypur Jagadishpur cross-country gas pipeline linked Mumbai high and basin gas fields with various fertilizer, power, and industrial complexes in western and northern India. Overall, India's gas pipeline infrastructure has expanded from 1,700 to 18,500 km of cross-country pipelines. Since the ancient period, India was one of the seafaring countries. Its seamen sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture. Waterways are the cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. It is a fuel-efficient and environment-friendly mode of transport. India has inland navigation waterways of 14,500 km in length. Out of these, only 5,685 km are navigable by mechanized vessels. The following waterways have been declared as the national waterways by the government. तो यहाँ पर भी दिखाया गया आपको, देखो वाटरवेज दिखाया गया, क्या ये क्या बोले, सॉरी रेल लाइन दिखाया गया है, सॉरी रेल लाइन दिखाया गया ये. तो रेलवे लाइन हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम बानीहाल टू बारामूला इन द कश्मीर वैली. लोकेट दीज टू टाउन्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया. ये अच्छा है, बानीहाल टू बारामूली.
तो हमने वाटरवेज पढ़ रहे थे, और ये जो है गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया कि ये हमारा नेशनल वाटरवे है। द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, दैट इज NW नंबर 1, एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी, NW नंबर 2, द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, कोट्टापुरम, कोल्लम, उदयमंगलम, उदयगमंडलम, एंड चंपकरा canals 205 km, and that is national waterway number 3. Specified stretches of Godavari and Krishna rivers along with Kakinada, Puducherry stretch of canals, national waterway number 4. Specified stretches of river Brahmani along with Matai river delta channels of Mahanadi and Brahmani rivers and east-west canal, national waterway number 5. There are some other inland waterways on which substantial transportation takes place. These are Mandavi, Juari, and Kumberjua, Sundarbans, Barak, and backwaters of Kerala. Apart from these, India's trade with foreign countries is carried from the ports located along the coast. 95% of the country's trade volume, 68% in terms of value, is moved by sea. Major seaports. With a long coastline of 7,516.6 km, India is dotted with 12 major and 1,200 notified non-majors, minor or intermediate ports. These major ports handle 95% of India's foreign trade. Kandala in Kutch was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai port in the wake of loss of Karachi port to Pakistan after the partition. Kandala, also known as the Din Dayal port, is a tidal port. Okay, so Kandala port is a tidal port, remember it. It caters to the convenient handling of exports and imports of highly productive granary and industrial belt stretching across UT of Jammu and Kashmir, and the states of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, and Gujarat. Mumbai is the biggest port with a spacious, natural, and well-sheltered harbour. The Jawaharlal Nehru port was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region. Marmagao Port, Goa, is the premier iron ore exporting port of the country. This port accounts for about 50% of India's iron ore export. New Mangalore port, located in Karnataka, caters to the export of iron ore concentrates from Kudremukh mines. Kochi is the extreme southwestern part, located at the entrance of a lagoon with a natural harbour. Moving along the east coast, you would see the extreme southeastern port of Tuticorin in Tamil Nadu. This port has a natural harbour and rich hinterland. Thus, it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes too. Even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc., and the coastal regions of India. Chennai is one of the oldest artificial ports of the country. It is ranked next to Mumbai in terms of the volume of trade and cargo. Visakhapatnam is the deepest landlocked and well-protected port. Visakhapatnam is the deepest landlocked and well-protected port. This port was originally conceived as an outlet of iron ore exports. Paradip port, located in Odisha, specializes in the export of iron ore. Kolkata is an inland riverine port, and this port serves a very large and rich hinterland of Ganga-Brahmaputra basin. Being a tidal port, it requires constant dredging of Hooghly. Haldia port was also developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. Now airways की बात करते हैं. The air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. It can cover very difficult terrains like high mountains, dreary deserts, dense forest, and also long oceanic stretch with great ease. Think of the northeastern part of the country, marked with the presence of big rivers, dissected relief, dense forest, and frequent floods and international frontiers, etc. In the absence of air transport, air travel has made access easier. Then Pawan Hans Helicopters Limited provides helicopter services to Oil and Natural Gas Corporation in its offshore operations to inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and the interior parts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttarakhand. Air travel is not within the reach of the common people. It is only in the northeastern states that special provisions are made to extend these services to the common people. Communication. Ever since humans appeared on the earth, they have used different means of communication, but the pace of change has been rapid in modern times. Long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. Personal communication and mass communication, including television, radio, press, films, etc., are the major means of communication in the country. The Indian Postal Network is the largest in the world. It handles parcels as well as personal written communications. Cards and envelopes are considered first-class mail and are
airlifted between stations covering both land and air. The second class mail includes book packets, registered newspapers, and periodicals. They are carried by surface mail covering land and water transport. To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. They are called Rajdhani Channel, Metro Channel, Green Channel, Business Channel, Bulk Mail Channel, and Periodical Channel. Major ports and some international airports: Amritsar, Raja Sansi, Delhi, Indira Gandhi International, Kolkata, Netaji Subhash Chandra Bose, then Haldia. अच्छा, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं और पोर्ट की बात कर रहे हैं, मैंने दोनों साथ में दिखाया गया। तो हल्दिया पोर्ट है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये हमारा एयरपोर्ट है, जो कि दमदम एयरपोर्ट भी बोला जाता था। देन आपका दिल्ली यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अमृतसर में राजा सांसी एयरपोर्ट है। देखो एरोप्लेन का छवि दे रहा है तो एयरपोर्ट है, और या कोई बीच लैंड के ऊपर कोई पोर्ट तो होगा नहीं ना। देन पारादीप है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई एक पोर्ट है, और यहाँ पर मीनमबक्कम जो एयरपोर्ट भी है, तूतीकोरिन पोर्ट है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट भी है, कोची में भी एक पोर्ट है, और न्यू मैंगलोर में पोर्ट है, मार्मागांव में पोर्ट है, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, कांडला में कांडला पोर्ट है। ठीक है, ये सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट दिखाया गया। अब हम देखते हैं, डू यू नो डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर ए नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। द फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज IT, इंडियन टैलेंट प्लस IT प्लस IT, यानी इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज IT, दैट इज इंडिया टुमारो। IT एंड इज ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल एंड एनेबलिंग चेंज। किसने ये सब बनाता है पता नहीं यार। इंडिया है जो वन ऑफ दी, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अच्छी है ना इसे, बट बनाता कौन है? IT, इंडियन टैलेंट, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT मीन्स इंडियन टुमारो, इंडिया टुमारो, 3 फुल फॉर्म है एक ही एब्रीविएशन का। देखो यहाँ पर बोल रहे इमरजेंसी कॉल बॉक्स ऑन NH8। इंडिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया, और एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस more than 2/3 of the villages in India have already seen covered with subscriber trunk डायलिंग, दैट इज STD टेलीफोन फैसिलिटी। STD का फुल फॉर्म आपका ICT सेक्शन में पूछा जा सकता है, याद रखना, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। EMRS में आने वाला एग्जाम EMRS ही है, EMRSE है। In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country. There is a uniform rate of STD facilities all over India. It has been made it's possible by integrating the development in space technology with communication technology. Mass communication provides entertainment and creates awareness among people about various national programs and policies. It includes radio, television, newspaper, magazines, books and films. All India Radio, that is Akashvani, broadcasts a variety of programs in national, regional and local languages for various categories of people spread over different parts of the country. Doordarshan, the national television channel of India, is one of the largest terrestrial networks in the world. It broadcasts a variety of programs from entertainment, educational to sports, etc. for people of different age groups. India publishes a large number of newspapers and periodicals annually. They are of different types depending upon their periodicity. Newspapers are published in about 100 languages and dialects. Did you know that the largest number of newspapers published in the country are in Hindi, followed by English and Urdu? India is the largest producer of feature films in the world. It produces short films, video feature films and video short films. तो फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म के अंदर क्या अंतर है, सर्च करके देखो ना। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स. International trade, the exchange of goods among people, states and countries is referred to as trade. The exchange of goods among people, states and countries is referred to as trade. The market is the place where such exchanges take place. Trade between two countries is called international trade. It may take place through sea, air or land routes. While local trade is carried in cities, towns and villages, state level trade is carried between two or more states. Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. As the resources are space bound, no country can survive without international trade. Export and import are the components of trade. The balance of trade of a country is the difference between its export and import. When the value of export exceeds the value of imports, it is called a favorable balance of trade.
On the contrary, if the value of imports exceeds the value of exports, it is termed as unfavorable balance of trade. India has trade relations with all the major trading blocs and all geographical regions of the world. The commodities exported from India to other countries include gems and jewelry, chemicals and related products, agriculture and allied products, etc. The commodities imported to India include petroleum crude and products, gems and jewelry, chemicals and related products, base metals, electronic items, machinery, agriculture and allied products. India has emerged as a software giant at the international level, and it is earning large foreign exchange through the export of information technology. Tourism as a trade. Tourism in India has grown substantially over the last 3 decades. More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. Tourism also promotes national integration, provides support to local handicrafts and cultural pursuits. It also helps in the development of international understanding about our culture and heritage. Foreign tourists visit India for heritage tourism, ecotourism, adventure tourism, cultural tourism, medical tourism and business tourism. There is a vast potential for development of tourism in all parts of the country. Efforts are being made to promote different types of tourism for this upcoming industry. On the map of India, show important tourist places of your state or UT and its connectivity with other parts of the country, say by railways, roadways or airways. Discuss in the class what type of tourism may be developed in your state, UT, Baddo. So India ranked world's 4th best holiday haven. तो ये डेटा पुराना है, तो आपको रिसेंट का देखना है. 2006 की बात करें, यहाँ पर इंडिया था नंबर 4 में 2006 में. ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इसी के साथ हमारा क्लास 10 की NCERT भी ख़त्म होती है. और बोल सकते हो कि लगभग क्लास 6 to 12 हमने NCERT को कंप्लीट कर लिया है. सिर्फ एक ही बुक बाकी है, वो है क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल जियोग्राफी बुक है वो वाला, तो भी हम कवर कर देंगे. ठीक है, और ऐसे EMRS में जो है वो वाली भी सिलेबस है, तो मैं देखता हूँ अगर इस 2-3 दिन में मैं आपको कवर कर पाऊँ तो कर लूँगा. ताकि रिवीजन तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिवीजन देना है. ठीक है, बुक एक आप 2-3 बार पढ़ सकते हो, बट आपका एक्चुअल रिवीजन जो होगा ना, इसे हम एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं. ठीक, एक्टिव रिकॉलिंग. जब आप प्रीवियस ईयर पेपर से रिवीजन करते हो, मतलब क्वेश्चन देखा और उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने की कोशिश किया, आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर, तब उसे हम बोलेंगे एक्टिव रिकॉलिंग. तो वही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे. तो आप अगर आपको लगता है कि मैंने NCERT पढ़ा है, मेरा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, तो आप प्लीज़ PYQ से रिवीजन कर सकते हो. ठीक, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दी कमिंग EMRS एग्ज़ाम ऑन 16th December. ठीक है, एंड आई डोंट नो, आई विल रिकॉर्ड दी जो NCERT क्लास का 12 प्रैक्टिकल जियोग्राफी का बाकी है वो रिकॉर्ड करूँगा का नहीं, वो मेरे को नहीं पता, बट मैं कोशिश करूँगा. और ऐसे मैं कर भी दूँ तो आपको दिखने के लिए मैं नहीं बोलूँगा. आपकी जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए. ये सारे बाद के लिए है, जो आने वाले में टाइम में प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए ये वीडियोज़ जो है. और मैंने इसको रिकॉर्ड किया क्योंकि फॉर द रिवीजन पर्पस, एंड आई एम रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो या दैट्स इट, राइट. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग. सी यू इन द next time, and I wish all my friends for the upcoming EMRS examination on 16th December. Thank you.